क्लास 6 साइंस रिवीजन। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को फाइनल टर्म का रिवीजन कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस रिवीजन में क्या कुछ दिया हुआ है और कैसे करना है इस रिवीजन को। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ से स्टार्ट चल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, कौन सा है इसमें से। तो फर्स्ट है दिस इज नेचुरल मैग्नेट। कौन सी इसमें से नेचुरल मैग्नेट है वो बतानी है आपको। तो ये बच्चों इसका सी ऑप्शन सही है, लैंड स्टोन। मैग्नेटिक नीडल नहीं है, मैग्नेट भी नहीं है और सॉफ्ट आयरन भी नहीं है। चलिए इसके बाद सेकंड आता है दिस इज अ मैग्नेटिक सबस्टेंस। इसमें से कौन सा मैग्नेटिक सबस्टेंस है वो बताना है। ग्लास तो है नहीं, कॉटन भी नहीं है, रबर भी नहीं है, तो ये आयरन है आपका। सो आयरन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमानेंट मैग्नेट आर मेड फ्रॉम। किस चीज से बनी होती है परमानेंट मैग्नेट वो बताना है। तो इसका आयरन से भी नहीं बनती है, निकल से भी नहीं बनती है, कोबाल्ट से भी नहीं बनती है। ये डी है, एल निको से बनती है परमानेंट मैग्नेट, जो जल्दी खत्म नहीं होती है। चलिए फोर्थ नंबर पे देखते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अ मैग्नेट हमें बताना है कौन सा है। तो ये अट्रैक्ट अदर नॉर्थ पोल, नॉर्थ तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, रिपेल करेगा। ये तो बी ऑप्शन है, रिपेल अदर नॉर्थ पोल, दूसरे नॉर्थ पोल को ये रिपेल करेगा। साउथ पोल को तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है नंबर 5, मैग्नेटिक पावर ऑफ अ मैग्नेट इज। क्या है इसका, ये है मैक्सिमम एट द पोल्स। मैग्नेटिक पावर जो है वो पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। चलिए नेक्स्ट है, फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन राइस, पोटैटो एंड शुगर। क्या चीज इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। सो इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन भी नहीं होते हैं, प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं, मिनरल्स भी नहीं होते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, डायरिया ओकर्स ड्यू टू। किसके कारण डायरिया होता है वो बताना है। तो ये ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर, यानी कि गंदा पानी पी लिया तो उसकी वजह से होता है ये। चलिए ये देखते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में ऑकर्स ड्यू टू। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स किसके कारण होती है वो बताना है आपको। तो ये सॉइल पोल्यूशन तो होगा नहीं, एयर पोल्यूशन से होता है, क्योंकि सांस एयर से ही लेनी होती है, वाटर से भी नहीं हो सकता, नॉइज से भी नहीं हो सकता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैक्सीनेशन फॉर विच डिजीज इन्वॉल्व्स टॉकिंग एंड ओरल डोज ऑफ द वैक्सीन। तो कौन सा है इसका बच्चों। तो ये है डी, ओरल वैक्सीन किससे दी जाती है, पोलियो के लिए दी जाती है। सो पोलियो, डायरिया भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, कोल्ड भी नहीं है, केवल पोलियो के लिए ही ओरल वैक्सीन दी जाती है। फॉर डिस्पोजल गार्बेज शुड बी। क्या होना चाहिए। तो ये ए है आपका, पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स। इन सबको प्लास्टिक बैग्स में पैक कर देना चाहिए। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ। कौन सा इसमें कितने मिनट लगते हैं ये आपको बताना है। तो 8 मिनट्स लगते हैं ये। नाउ सेकेंड है ये, व्हेन मून पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द अम्ब्रा ऑफ द अर्थ देन। तो क्या होगा इसका, इसमें हो जाएगा आपका टोटल लूनार इक्लिप्स ऑकर्स। When the sun is at the top of the head, then the length of the shadow of a man will be। तो बहुत छोटी होती है बच्चों, उस समय मिनिमम होगी। Fill in the blanks. First है, an object which has its own light is called। इसको लाइट सोर्स बोलते हैं, लाइट सोर्स। मैंने वैसे सारे ऊपर लिख दिए हैं, ऊपर देख करके भी आप भर सकते हो। अगर किसी में गड़बड़ होता है तो उसको सही भी कर सकते हो। अगला है,
लाइट ट्रेवल्स इन अ लाइन, तो स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। थर्ड है इक्लिप्स ऑफ द मून एंड द सन ऑकर्स ड्यू टू द शैडो कास्ट बाय द अर्थ एंड, किसके कारण हो जाएगा ये, मून रिस्पेक्टिवली। नंबर 4 की बात कर देते हैं। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज बाय अ शाइनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगला है इज कॉल्ड द कन्वर्सन कन्वर्जन ऑफ फाइबर इनटू थ्रेड, यह है कोकोनट। मेकिंग ऑफ yarn फ्रॉम फाइबर इज नोन एज, ये इज है बच्चों यहाँ पे, नोन एज क्या होता है, वीविंग बोलते हैं इसको, वीविंग। अगला है कॉटन एंड जूट, ये है कॉटन एंड जूट गिव्स प्लांट्स फाइबर। फोर्थ है नायलॉन इज अ फाइबर, कौन सी फाइबर है ये, आर्टिफिशियल फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर। यहां पर आएगा नाइट ब्लाइंडनेस, शुरू में आपका नाइट ब्लाइंडनेस आएगी। डिजीज इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन, यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस वाला भरना था आपको, विटामिन ए से है ये। चलिए अगला देखते हैं। सोर फ्रूट्स कंटेन, सोर फ्रूट्स क्या कंटेन करते हैं, विटामिन सी, सो यू कैन राइट हियर विटामिन सी। एनर्जी गिविंग फूड इज, थर्ड में एनर्जी गिविंग फूड इज, तो राइस है इसमें बच्चों, ध्यान रखना। यहां देखो राइस लिखा हुआ, यहाँ पे विटामिन सी था ऊपर वाले में। बॉडी बिल्डिंग फूड इज, तो ग्राउंड नट है या बनाना है ये आपको बताना है, तो इसमें ग्राउंड नट आएगा ये वाला। नंबर 5 में देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बैलेंस डाइट, ये जो लिखा हुआ है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज, तो कौन है, सन है हमारे पास। सेकंड है मून बाय द लाइट ऑफ द सन, यानी साइंस आएगा यहाँ पे, साइंस बाय द लाइट ऑफ सन। थर्ड है स्टार्स शाइन देमसेल्फ, path of light is a straight line.
फिफ्थ है लाइट ऑफ द सन रीच द अर्थ इन, कितने में है ये? 8 मिनट और 20 सेकेंड है ये। या सिंपली कह सकते हो 500 सेकेंड भी कह सकते हो इसकी जगह पे, तो एक ही मतलब है दोनों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले है नंबर एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन विल गो टू द डी नंबर। केयर फॉर द बॉडी, इट विल गो टू द फर्स्ट नंबर। टोबैको, टोबैको च्युइंग, टोबैको च्युइंग मीन्स क्या हो जाएगा इसका? सो दैट विल गो टू द ई, माउथ कैंसर, सो दैट वन इज द गोज टू द सेकेंड नंबर। थर्ड है पार्ट इफेक्टेड बाय स्मोकिंग, स्मोकिंग से क्या इफेक्ट होता है बताना है आपको। सो लंग्स होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, सो इट विल गो टू द थर्ड नंबर। नंबर 4 है ये मिनरल्स एंड विटामिन्स, सो ये बी ऑप्शन आएगा, बॉडी बिल्डिंग, सो इट विल गो टू द फोर्थ नंबर। नाउ फिफ्थ है पर्सनल हेल्थ, तो पर्सनल हेल्थ में केवल सी आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, सो इट विल गो टू द फिफ्थ नंबर। सो यू कैन राइट द करेक्ट ऑप्शन, इसके सामने लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट नंबर है फोर्स, फोर्स की यूनिट बतानी है, दैट विल द सी यानी न्यूटन है, सो इट विल गो टू द फर्स्ट नंबर। Number 2, an electric pole. So that is this one E, a static object. So that will go to the second number. यह है नंबर प्रेशर, थर्ड के लिए प्रेशर, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, सो इट विल गो टू द ए नंबर, पास्कल है, सो इट विल गो, कैन राइट द थर्ड नंबर। नाउ फोर्थ है स्पीड, स्पीड की यूनिट जो होती है बी में आएगा, मीटर पर सेकेंड होती है, जो इट विल गो टू द फोर्थ नंबर। नाउ फिफ्थ है अ फ्लाइंग बर्ड, सो एक ही ऑप्शन बचा रह गया डी, सो बॉडी इन मोशन, सो इट विल गो टू द फिफ्थ नंबर। स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है देयर शुड बी नो स्टैंडिंग वाटर इन द ग्राउंड near taps, well and in our homes, so that is true. Second है we should dirty our houses, schools and public toilets, so that is the false statement. Third है we should spit on walls and roads, so ये भी false statement है। Fourth है the peels of fruit and vegetables should be filled in polythene bag before throwing, so it is your false। Fifth number है the dining area should be kept clean, so it is your true। Sixth number है the we should delay taking the sick person to the hospital, delay कर दे तो मर जाएगा बेचारा, false statement। सेवन है लाउड स्पीकर शुड बी यूज्ड एट फुल वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम तो भी मारोगे क्या सबको, फॉल्स स्टेटमेंट। एट्थ है प्लांट्स एंड ट्रीज शुड बी कट, काट दोगे तो भी मर जाओगे, फॉल्स स्टेटमेंट। नाइन्थ वी शुड नॉट यूरिनेट अराउंड हाउसेस एंड पब्लिक प्लेसेस, सो इट इज ट्रू है ये। Now force can change speed and direction of motion but cannot change the shape, so it is your false statement। Second है a fruit falling from a tree is not an example of gravitational force, so it is also false statement। Third है our life would have been more comfortable without friction, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ है द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, सो ये ट्रू है आपका।
फिफ्थ है बैरोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर। सो प्रेशर तो नापेगा, ये भी ट्रू है आपका। सिक्स नंबर देखते हैं, द मोशन रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन पीरियडिक मोशन। सो दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स के होंगे, 8 क्वेश्चन है। सो फर्स्ट है, व्हेन आर वी एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। आंसर है, when the light is scattered from an object enter our eyes, only then we are able to see the object. Name any 4 man-made source of light. So answer है यहाँ पे, man-made source of light are, फर्स्ट है टॉर्च, सेकंड है ट्यूबलाइट, थर्ड है बल्ब, फोर्थ है ऑयल लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इंसेक्ट दैट इमिट्स लाइट। तो जुगनू है वैसे तो बेचारा, फायरफ्लाई इज एन इंसेक्ट दैट इमिट्स लाइट। रात में जुगनू चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच पर्पज सी नेविगेशन यूज द मैग्नेटिक कंपास। आंसर है यहाँ पे, शिप एंड नेविगेटर यूज द मैग्नेटिक कंपास टू नो द डायरेक्शन। From what material is magnet protector made of? So magnet protector is made up of a rod of soft iron to protect magnet. What do you mean by natural fiber? So answer is here, the fiber obtained from plants, animals and insects are called natural fibers. नंबर 7 है, राइट द नेम ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। आंसर है, जूट एंड कॉटन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। नेम द फाइबर्स यूज्ड टू मेक sacks और सनी बैग्स टू कीप द ग्रेन्स एंड मैट यानी टाट पट्टी यू सिट ऑन। सो आंसर है, जूट इज यूज्ड टू मेक sacks or sunny bags to keep the grains and mats यानी टाट पट्टी you sit on. Next question, give the name of method by which yarn thread is obtained from the fiber. So answer is, weaving is the method by which thread is obtained from fiber. Why should fruit and vegetable be washed before use? Answer is here, fruit and vegetables should be washed before use to destroy the germs and microorganisms present on them. Why should food and water kept covered? So answer है इसका, food and water should always be kept covered so that it is not polluted. Why is health education necessary? So answer is, health education is necessary because through education we can identify the disease in our body. Next question, what all should be kept in mind to keep healthy? So answer है, for good health it is necessary to have first regular bowel habits, bathing, proper exercise, rest and sufficient sleep. Why cleaning of hand is essential before taking food? So answer है इसका, cleaning of hand is essential before taking food with the soap to keep a person healthy. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन। ये आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स के होंगे, 9 का हो जाएगा टोटल। तो क्वेश्चन है यहाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। तो आंसर ले रहे हैं हम इसका दोनों के बीच में। तो यहाँ प्लांट्स है और ये एनिमल्स है। तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, प्लांट्स कैन नॉट मूव बट एनिमल कैन मूव।
Second है plant can prepare their own food, but animals cannot prepare their own food, but they depend on the plant for their food. State the difference between umbra and the penumbra. So answer है if an opaque object is kept in the path of light, no rays reaches the other side. Therefore, there is complete darkness in that region. This region is called umbra, and the region where light from some parts reaches a diffuse shadow is formed. This region is called penumbra. Explain the difference between uniform and non-uniform motion. So answer is here. If an object travels equal distance in equal intervals of time, it is called uniform motion, that is motion of an aeroplane. If an object travels unequal distance in equal time interval, the interval of time, it is called non-uniform motion, that is motion of a car. Differentiate between monocyclotidins and dicotyledonous plant. कौन सा प्लांट बोलते हैं भाई? क्या? यही मोनोकोटोडिलन मोनोकोटोला मोनोकोटो कोटिलिडोनस बोलते हैं तो चलो होगा जो भी आंसर है monocotyledonous plant. In monocotyledonous plants like wheat and maize stops growing after a certain length and the tip then branches into a fiber like structure, hence they are called fiber roots. Dicotyledonous plants. In dicotyledonous plants like gram and peas, the radicle continues to grow and branches arises from it. These are called tape roots. Differentiate fiber roots and tape roots. So tape root system, there is a main thick root in the tape root which grows vertically down into the soil. This root gives out many branches. Example है pea, neem, mango, etc. Keep tape roots. Has tape roots. Number second have fibrous root system. This system do not have any main roots. These roots spread out in the soil and gives support to the plant. So example है इसमें wheat है, grass है, maize है और millet etc. has fibrous root. What is the difference between knitting with needles and weaving on looms? Moinsa Nisad, hello. Answer है knitting with needles. It is an important method of making clothes. These clothes have the ability to expand and shrink as required and get adjusted to fit the body. That is, sweaters, jerseys, banyans, etc. These clothes are useful and made by knitting. So weaving by loom, it is the main basis making of cloth. The yarn thread is interwoven in length and breadth to give a shape to the cloth, generally clothes. नेक्स्ट है गिव रीजंस. ये भी 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 9 मार्क्स के होंगे. So why we must not drink dirty water? So answer है by taking dirty water, vomiting, diarrhea or jaundice occurs in an individual.
Therefore, one should use water after filtration, boiling, or by adding alum. Why are artificial magnets used more than natural magnets? Answer है इसका artificial magnets are very in different size and they are strong and stable. It can be broadly used. Science natural magnets are not having this property. Why is health education necessary? So answer है health education is necessary because through education we can identify the disease in our body. Why are toilets necessary at our home and school? So answer है toilets are necessary at our home and school because if we do not use toilet and excrete in the open area, the probability of disease occurs. To protect ourselves from germs of the faces, toilets are necessary. Why is there a need to have a balanced diet? Answer है we should take a balanced diet, that is a diet that contains proper quantity of carbohydrates, proteins, fat, minerals and vitamins. For remains healthy, we used to take a balanced diet, that is a diet containing components of food is adequate quantities. Why earthworms are known as farmers' friends? So answer is here. Earthworms take dead and decaying substances from the soil as a food and removes biofertilizer from anus. This is also called a vermicompost. This contains nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizer in large quantity, which is essential farming. For farming, that's why earthworms are called farmers' friend. Why shadow of an object is casted? Why shadow or a transparent substance is not formed? Answer: when objects do not allow the light to pass through, then their shadows are formed. In this stage, a dark region is formed on the other side of the object, which is the shadow of the object. Shadows of a transparent substance is not formed because it allows the light to pass through it. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन के 4 मार्क्स आएंगे जो 16 मार्क्स को रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्रिस गेमर बाय बाय। Write the uses of magnet. So answer is uses of magnets are. First, magnets are used in built in boards, magnetic toys, stickers, electric bells.
इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो, टेलीविजन, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। इसको हटा के सो जाओ ना। सेकंड है यूजुअली द डॉक्टर यूजेस अ मैग्नेट टू एक्सट्रैक्ट minute iron pieces from the patient eyes. Third है iron ore is extracted from mixed ore by using a magnet. Fourth number है the main use of magnet is to make magnetic compass which is used in aeroplane and ship to know direction. Fifth, to lift very heavy iron blocks, cranes are fitted with magnet. How will you identify a magnet and a magnetic substance? चलिए आंसर है on bringing a magnet near a magnetic substance. Both the ends are attracted towards each other, but on bringing two magnets near each other, one end attracts whereas other ends repel. Whereas on bringing two magnetic substances together, there is neither attraction nor repulsion. Thus, on the above experiment, we can differentiate between a magnet and a magnetic substance. What is done to preserve the magnetic power of a magnet? So answer is to preserve magnetic power of a magnet. First, two bar magnets are placed with their dissimilar poles near and a woman piece is kept in between them. Number two है at their ends pieces of a soft iron is kept. The soft iron bands on or pieces are called magnetic protectors. How can magnetic properties of a magnet be lost? कैसे lost हो जाएगी बताना है इसको. Answer है the magnetic property of a magnet can be lost by the following ways. First है beating or heating a magnet. Second है heating a magnet. Third है keeping the two similar poles of two magnets near to each other. Number 4 है improper storage. How is clothes are selected according to the weather? Explain. So answer है ये clothes are selected according to the weather due to comfortable like. तो पहले समर देख लेते हैं. During the summer season should use cotton clothes because such clothes are having capacity to absorb the heat. Winter है ये woolen clothes are used during winter because they give warmth to the body. रेनी का देख लेते हैं. During raining season clothes made by artificial fiber are used because they dry early. Suppose you have two iron rods and one of them is a magnet. How will you identify? So answer है यहाँ पे to differentiate between a magnet and an iron rod. We will take another magnet and bring it near both the ends of both the magnet and the rod. So if there is attraction to both and then it is an iron rod, and if it is attract to one and is repelled by the other end, then it is a magnet. Thus repulsion identifies a magnet. Magnet के लिए
रिपल्सन का ही होना जरूरी है। What are the magnetic and non-magnetic substances? So answer is here. Magnetic substances, those substances which can be attracted by a magnet or which can be converted to a magnet is known as magnetic substance. एक्सप्लेन कर लो इसको। एग्जांपल है आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, स्टील है एंड एलॉय एक्सेट्रा। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस देख लेते हैं। दो सब्सटेंस which are not attracted by a magnet or which cannot make a magnet even by artificial method is known as non-magnetic substance। एग्जाम्पल देना है, कॉटन है, वुड है और पेपर है, रबर है, ग्लास एक्सेट्रा। If sunlight takes 8 minutes to reach the earth and the speed of light is 3 lakh kilometers per second, calculate the distance of the sun from the earth। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का टू स्पीड इंटू टाइम हो गया है। इसमें स्पीड कितना दिया है? 3 लाख दिया हुआ है, तो यहाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा और टाइम आपका 8 मिनट है, तो 8 इंटू 60 कर देंगे तो 480 सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद क्या है? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस रख दिया यहाँ पे। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड एंड टाइम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ गया। ये तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वाला, किलोमीटर में है तो पावर 5 हो जाएगी और 484। सो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1440 और तो 2 जीरो, इसके बाद 3 जीरो किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। ये दो ही बनाने होंगे, 5 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के आएंगे। तो थर्ड है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बनाना है। इसमें ये पेनेक्स से दिखा रखा है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका माउथ हो गया है। इसके बाद स्लेवरी ग्लैंड से यहाँ पे जो रहती है इस जगह पे, और ये ओसोफेगस है जो गले के पास रहता है यहाँ। इसके बाद ये लीवर है, लीवर कहाँ रहता है? यहाँ पे रहता है। स्टोमक है, स्टोमक के लिए ये दिया हुआ है आपका। पैनक्रियास है ये। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है और फिर रेक्टम है और एनल ओपनिंग है। इस तरह से आप इसको डायग्राम को बनाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए सेकंड है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें डायग्राम पूरा बनाना है और फिर ये लेवलिंग क्या करनी है। ये नोज है यहाँ पे, ये ट्रेकिया है, लंग्स हैं और ब्रेंचोइज हैं। ये तो ये सारे बनाने हैं आपको। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ये यहाँ पे देखो किडनी है, ये पेयर में होती है, एक यहाँ पर किडनी दिखाई दे रही है आपको। फिर इसके बाद यूट्रस हो गया जो यहाँ पर खुल जाता है ये। फिर आता है इसके बाद ब्लैडर, ये यहाँ पे ब्लैडर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आएगा लास्ट में यूरेथ्रा।
इसी के साथ बच्चों ये आज समाप्त हो रहा है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा और ये अपना कंप्लीट कर लेंगे। नीचे आपको एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, ये इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। और मेरा वीडियो लगा हो अच्छा तो उसको लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नई उमंग के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।